Without. Very good. हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बैक पेन, नेक पेन, हाथों और पैरों में जकड़न या फिर स्पाइन रिलेटेड किसी भी बीमारी से परेशान हैं, तो आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से इसका परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। लाखों लोग कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लेकर आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो देर किस बात की है। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। हाँ नेहा, तो अभी आपको आज आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ डे है ना यस treatment का? यस तो आप कुछ बताएंगे व्यूअर्स को क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी और क्या अभी प्रॉब्लम है अभी बाकी? एक्चुअली मेरे बैक में एंड नेक में बहुत ही ज्यादा पेन था। जो हैंड्स में, राइट हैंड में बहुत ही एक्टिवली ट्रांसफर हो रहा था और लेफ्ट में भी हो रहा था। ओके। बट वेरी एक्टिवली आई हैड लाइक अ वेरी बैड पेन इन माई शोल्डर्स एंड इन माई बैक। देन यू फिगर्ड इट आउट कि थोड़ा शोल्डर्स मिस अलाइंड नहीं है एंड अकॉर्डिंगली मैंने सेशंस लिए एंड आफ्टर वन सेशन आई फेल्ट अ लॉट बेटर। जो मुझे 2 महीने से पेन चल रहा था, बहुत ही ज्यादा पेनफुल था जो भी, वो मुझे एक सेशन के बाद ही काफी बेटर फील होने लगा। अभी ये सिचुएशन है इनका। ठीक है, आज फिर से एक बार ट्रीटमेंट देते हैं, फिर आप मुझे बताइए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है? Breathing without. Super. अभी C1 C2 जंक्शन को रिलीज कर रहे हैं हम दोनों साइड से। रिलैक्स, ब्रीथ इन, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। डू यू फील द क्रैक? यस। Great. Relax, breathe in. Okay, now we are moving to CT junction. Relax, breathe in, breathe out. Very good. Same releasing on the opposite side. Good. Relax. Breathe in, out. Wow. Relax. Breathe in, out. Breathe in, breathe out. So, one more. Breathe in, out. Good. Breathe in, out. Yes. Do you feel the crack? यस। Okay. Come back. Breathe in. Out. Super. Very good. Relax. Relax. Yes. Very good. Lean your body on me. Breathe in. Super. Which other you are? Again. Elbow close. Elbow close. Lean your body on me. Relax. Breathe in. Relax. Close. Slightly open it. Relax.
ब्रीथ इन, अभी कैसा लग रहा है? अभी ट्रीटमेंट जैसे कर लिया हमने कंप्लीट, तो अभी क्या फील हो रहा है? बेटर है क्योंकि पेन में काफी रिलीफ मिलता है आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस भी पता चलता है कि व्हाट आर प्रिकॉशंस दैट आई हैव टू टेक एट होम, सो दैट इज अ गुड पॉइंट, गुड थिंग। तो अगर पहले 1 to 10 के बीच में 9 to 10 था, तो हाउ मच पेन राइट नाउ यू हैव? अभी तो ऑनेस्टली मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है अभी। इट्स जस्ट द प्रेशर दैट आई एम फीलिंग व्हिच हैड, अदरवाइज पेन वाइज आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पेन। तो पेन वाइज इनको अभी ठीक लग रहा है? पहले जब ये आए थे तब पेन 9 to 10 के बीच में था स्टार्टिंग में, ग्रेजुअली कम होते होते अभी फील नहीं कर रहे हैं पेन।